Hello, this is Diljit Suraj. Welcome to our YouTube channel, Sumant Guruji. तो पिलामाने मु तुमको SST पढ़ेबी आ मु आज SST रो फर्स्ट चैप्टर नैची आशा करी सेशन तुम मानक भल लगे क्लास भल लगे समस्त वीडियो को लाइक करवा एवं चैनल को सब्सक्राइब करवा ठीक अच्छे सो देरी नक आम स्टार्ट करवा आम चैप्टर फर्स्ट चैप्टर ना रही लोकेटिंग प्लेसेस ऑन द अर्थ ओके अर्थ से आम प्लेस गुडी को लोकेट करवा बा चिन्हवा ठीक अच्छे सो ये चैप्टर रे पिले आम कौन कौन पढ़ा ये किछटा जिनस मेंशन कराई पिले व्हाट इज ए मैप आम कौन पढ़ा विषय व्हाट इज ए मैप मैप कौन एंड हाउ डू वी यूज इट एवं आम केमिति ताको यूज करबा व्हाट आर इट्स मेन कंपोनेंट्स तार मेन कंपोनेंट्स सब कौन व्हाट आर कोऑर्डिनेट्स कोऑर्डिनेट कौन ए चैप्टर रे हम देखिबा हाउ कैन लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड बी यूज्ड लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड को आम किपर यूज करूचे से विषय आलोचना करबा ओके कौन पाई मार्क एनी लोकेशन ऑन द अर्थ ओके सपोज इट इज इंडियन मैप एंड इट इज ए प्लेस दैट इज निमापड़ा और योर स्कूल ये गोटे मैप से मैप रे तुम स्कूल रो लोकेशन दिया जाइछि तार लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड को हमें केमती मेजर करूचे से विषय हमें पढ़िबा हाउ आर लोकल टाइम एंड स्टैंडर्ड टाइम रिलेटेड टू लॉन्गिट्यूड आउ कौन पढ़िबा किपरि लोकल टाइम एंड स्टैंडर्ड टाइम लोकल टाइम कहले आमे इंडिया रे रहउचे इंडिया रा टाइम होची लोकल टाइम स्टैंडर्ड टाइम कहले जोटा इंटरनेशनली प्रेजेंट करा है दैट इज स्टैंडर्ड टाइम सो हाउ आर लोकल टाइम एंड स्टैंडर्ड टाइम रिलेटेड टू लॉन्गिट्यूड केमिति लोकल टाइम और स्टैंडर्ड टाइम लॉन्गिट्यूड को रिलेट करछोंदे से विषय रे हमें इन चैप्टर रे पढ़िबा so let's start the chapter from the beginning so पिले एटी देखिबा कोन लिखा है imagine that you are visiting a city imagine that you are visiting a city for the first time प्रथम थर पई तुमे गोटे सिटी विजिट करूछ how would you find the places you want to visit how would you find तुम्हें किपरि फाइंड करिवो द प्लेसेस यू वांट टू विजिट जो प्लेस तुम्हें विजिट करिवा पई चाहुचो गोटे नुवा सिटी की जाउचो और सेठी तुम्हें कोन करिवा पई चाहुचो ना सेठी भलो भलो जागा बुलिवा पई चाहुचो सो तमे ताको केमिति जानिबो जे एठी भलो भलो ए जागा रहिछि यू माइट आस्क ए लोकल पर्सन फॉर द हेल्प तुम्हें कोन करि परिबो तुम्हें लोकल रो जे लोक थिबे तांको पचारि परिबो जे भलो जागा एठी कोठी अछि ओके हाउ कोन करि परिबो और यू माइट लुक एट ए मैप ऑफ द सिटी किंबा से शहर रो मैप को देखि परिबो इन प्रीवियस क्लास रे यू लर्नड ए लिटिल अबाउट मैप्स तुम्हें किछि अल्प जिनिस मैप विषय पढिछो एंड इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी देम इन मोर डिटेल और ये चैप्टर रे हमें पूरा डिटेल ता विषय रे पढ़िबा ठीक अछि हमें ये चैप्टर रे पूरा डिटेल पढ़िबा सो एटी क्वाइज प्ले लेट्स अस प्ले हम कहला लेट्स अस प्ले चलो खेलिबा गोटे खेल गेम एग्जामाइन द मैप ऑफ दिस स्मॉल सिटी गोटे एठी छोट सिटी रो मैप आम देखुचे ओके मानचित्र आम देखुचे छोट सिटी रो गोटे छोटिया शहर रो मैप आम देखुचे इमेजिन दैट यू जस्ट गॉट ऑफ ए ट्रेन एट द रेलवे इमेजिन तुम्हें अनुमान करो बा भाबो यू जस्ट गॉट ऑफ ए ट्रेन एट द रेलवे स्टेशन तुम्हें रेलवे स्टेशन रे गोटे ट्रेन पाइलो एंड यू वांट टू विजिट द बैंक मार्क्ड ऑन द मैप देखो पहले एठी बैंक कोठी अछि मार्क हेछि बैंक देखिबा
ओके सो एठी हमें सीट रो चित्र देखुचे ए सीट रो चित्र रे हम कोन देखुचे दिस इज द रेलवे स्टेशन दिस इज द रेलवे स्टेशन एंड हियर इज द अपार्टमेंट एठी अपार्टमेंट हम देखुचे देन एठी नगर पंचायत देखुचे एठी बैंक देखुचे तो देखो पहले सी कौन कहिला ना यू वांट टू विजिट द बैंक मार्क ऑन द मैप ताल देखो तुम कोठी पाइलो रेलवे स्टेशन examine the map of the small city imagine that you just got off the train in the railway station तुमे रेलवे स्टेशन रे ट्रेन रे बसिलो ओके सो इटा रेलवे स्टेशन एठी ट्रेन रे बसिलो कोठी इटा होछ तुमरो रेलवे स्टेशन एठी हमें ट्रेन रे बसिले देन बैंक कोठी अछि बैंक एठी रहिछि ठीक अछि व्हिच वे वुड यू गो ताहाले तुमे को रास्ता देकी जीवो को रास्ता देकी जीवो ओके सो फास्ट देखो गोटे रास्ता एठी अछि रेलवे स्टेशन रु आम एमती हॉस्पिटल देकी ओके देन नगर पंचायत देकी आमे बैंक को जाई परिबा नचेत आउ गोटे बाट कोन अछि बिले रेलवे स्टेशन रु आमे स्कूल देकी मार्केट देकी एठी बैंक को जाई परिबा ओके एठी गोटे रूट अछि एठी गोटे रूट अछि दीटा रूट अछि हमकु पाख कोडा पड़िला हमें पाख रास्ता जीवा एठी मध्ये आ गोटे अछि हॉस्पिटल रु एपट साइड देकी मध्ये हमें बैंक रे पहुंच परबा 3 नंबर रूट तीनटा रूट हमें एठी पाइले ठीक अछि केतरा रूट पाइले तीनटा रूट पाइले देन व्हिच वे वुड यू गो तुमे को रास्ता रे जीवो आर देयर अदर पॉसिबल वेज कैन यू लोकेट द पब्लिक गार्डन द स्कूल एंड द म्यूजियम देखो पिला माने एठी कहिछि तुमे लोकेट कर कहा को पब्लिक गार्डन को सो पब्लिक गार्डन हमें कोड देखुचे एठी हमें देखुचे अपार्टमेंट एठी रेलवे स्टेशन एठी हॉस्पिटल एठी स्कूल एठी मार्केट एठी म्यूजियम एठी बैंक आई थिंक दिस इज द पब्लिक गार्डन मेंशन करिने पब्लिक गार्डन ओके सो कौन कहला कैन यू लोकेट द पब्लिक गार्डन हम लोकेट कर दिले द स्कूल दिस इज द स्कूल भी लोकेट कर दिले एंड द म्यूजियम एवं म्यूजियम को भी हमें लोकेट करी देले क्लियर समझते इफ यू वांट टू प्रोसीड फ्रॉम द बैंक जदि इफ यू वांट टू प्रोसीड फ्रॉम द बैंक टू द मार्केट जदि तुमे बैंक रो मार्केट को प्रोसीड करिवो व्हिच वे विल यू गो ताहाले तुमे को रास्ता देकी जीवो देखो बिले बैंक रो मु कोठी की जीवा पय मते कहिछि इफ यू वांट टू प्रोसीड फ्रॉम बैंक टू द मार्केट बैंक रो मार्केट जीवा पय चाहिबो बिले बैंक रहिला एठी मार्केट रहिला कोठी मार्केट रहिला एठी देखो मु एठी आसिले मु सहज रे पहुंची परिबी मार्केट रे यस और नो so this is where a map comes in handy so ei bhali bhabare ame gote सहर को लोकेट करि परछे सहर रो विभिन्न प्लेसेस को आमे गोटे नुवा सहर को जाउछे सेठी रहिबा सेठाकर मार्केट सेठाकर हॉस्पिटल सो आमे गोटे मैप देखि के रिप्रेजेंट करि परबो सो एटा गोटे बेसिक जिंस थिला तुमको केमति तुमे मैप को स्टडी करि परिबो मैप रे केमति विभिन्न स्थान को लोकेट करि परिबो सेटा जस्ट आइत्रे तुम मान को इंफॉर्मेशन दिया जाय छी आई होप समस्त एटी क्लियर हे जाइबो देन जदि कहबा ए मैप इज लाइक ट्रेजर गाइड इट इज शोज यू वेयर थिंग्स आर एंड हाउ टू गेट देम सो एटी मैप रो डेफिनेशन मेंशन करा गला पहिले मु जोटा को हाईलाइट करबी अंडरलाइन तो मु जोटा पढेबी सेटा अंडरलाइन करबी किंतु जोटा को मु हाईलाइट करबी सेटा को तुम नोट करबो ओके सो माने सेटा होची तुमरो इंपोर्टेंट मेन इंपोर्टेंट पॉइंट तुम एठी हाईलाइट करिया पई चाहिबे जे व्हाट इज ए मैप इज लाइक ए ट्रेजर गाइड जेम जोटे ट्रेजर गाइड थाए ना सेमती मैप तुमरो गोटे गाइड
इटा कौन तुमको दिखाए इट इज शोज यू वेयर थिंग्स आर कोठी जिंस गुडी को अछि कोठी हॉस्पिटल अछि कोठी मेडिकल सॉरी कोठी म्यूजियम अछि कोठी स्कूल अछि ओके एंड हाउ टू गेट देम एवं केमिति आमे ताकू पाई परिबा को रास्ता देई गले हमको कम रास्ता पड़िबो ओके कोटा हमको इजी पड़ी हबो सेटा आमे मैप रु जानि पड़ू क्लियर समझते सो जदि क्वेश्चन आसिला व्हाट इज मैप जदि क्वेश्चन आसिला व्हाट इज मैप आमे लिखि परिबा व्हाट इज मैप a map is like a treasure guide it is shows you where things are and how to get them कोड जिंस गुडी को अछि एवं आमे ता पटर केमिति पहुंचलो notice the four arrows in the top right corner of the map देखो पिले एटी चारिटा आरो दिया जाई छि टॉप राइट कॉर्नर रे this is the top and this is the right side okay this is left side and this is right side so she goes to notice four arrows in the top right corner of the map. We will soon see how they point to some specific direction and make maps even more helpful. देखो पिले एटे लिखा है नॉर्थ सो ए पार्ट टा नॉर्थ हैला एटा साउथ हैला ओके एटा ईस्ट हैला एटा वेस्ट हैला नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट सो एटा डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करूची कोठी अछि एटा ना टॉप राइट कॉर्नर रे हम एटा देखुची जोटा कि मैप को आहुरी इजी बनै दउची लेट्स एक्सप्लोर चलो एक्सप्लोर करबा ऑन द मैप फिगर 1.1 गिवन ऑन पेज 8 जो आप पूर्व जो पेज देखुतले मार्क द हॉस्पिटल हॉस्पिटल को मार्क करो पिला माने एठी हॉस्पिटल को मार्क करिची कोठी अछि हॉस्पिटल where is hospital this is market this is railway station this is apartment and this is hospital okay what is the meaning of the blue colored areas what is the meaning of the blue colored areas so पिला माने एठी जो blue colored areas अछि तार अर्थ कोन एठी तो 8 गुटा कहि blue अछि ना blue colored areas so blue colored area generally हम रिप्रेजेंट करू रिवर आ ओशंस को ओके जोटा वाटर रो सोर्स थाए सेटा को हम ब्लू कलर रे रिप्रेजेंट करू blue color areas means water sources like river oceans which is which is farther away from railway station to the school school को railway station को कोटा भलो बाट the nagar panchayat or the public garden कोटा farther what is the mean of a farther एटी गोटे वर्ड आसिला हमें आसिले जे farther so एटी हम देखिबा what is the meaning of a farther की कहबो पिले farther रो मीनिंग कोन far ru हेछि farther far means distance farther means मु तार केतरा सिनोनिम भी तुमको कहि देबी ओके सिनोनिम भी हमें एठी मेंशन करबा what are the synonym of a farther देखो पहले farther रो synonym हबो a long way लंबा रास्ता अब कौन हबो up okay up to a point long distance so these are synonyms of farther and the meaning of farther so कोटा far हबो कोटा distance हबो कोटा दूरता हबो which is the farther away from the railway station to the school the nagar panchayat or the public garden so कहला किए फादर नगर पंचायत ना बहुत दूर ना पब्लिक गार्डन टा बहुत दूर ओके सॉरी सो नगर पंचायत ना पब्लिक गार्डन कोठु पिले कहि से रेलवे स्टेशन कोटा बेसी दूर सो एठी रहला रेलवे स्टेशन एठी रहला नगर पंचायत पब्लिक गार्डन देखो मुझे कलर चेंज कर दो पेन रा एंड इरेज भी कर दो
देखो पहले तो एठी रहिला रेलवे स्टेशन, एठी रहिला रेलवे स्टेशन, एठी रहिला पब्लिक गार्डन, एठी रहिला पब्लिक गार्डन। से कहा कथा पचार बोले नगर पंचायत पब्लिक गार्डन। देखो सो नगर पंचायत एठी रेलवे स्टेशन रु एमती हॉस्पिटल देकी गले आमे नगर पंचायत रे पहुंचवा, पुणी एठू हमको अधिक डिस्टेंस देकी गला परे आमे जाइकी पब्लिक गार्डन रे पहुंचवा। सो पब्लिक गार्डन इज फार्दर, ओके, व्हिच फार पब्लिक गार्डन इज फार। Then come to next topic, that is a map and its components। एबे हमें को विषय पढ़िया पिले a map and its component कौन पढ़िया a map and its component गोटे मैप एवं तार कंपोनेंट विषय पढ़िया। लेट्स डिस्कस a map and its components। so मैप रे सब कौन कौन कंपोनेंट्स रही थाए। From this simple example, we understand that a map is a representation। Okay, from the simple example, आमे जो example देखिले आमे सेतरु जानिले जे a map is a simple representation or drawing of some area। It may be small area, a village, a town, etc., or a bigger area, okay, or a very large area like India or even whole world। so एठी मध्य what is map रो गोटे description हम पाखरे मिल गला, what is map रो गोटे definition हमको मिल गला। एको भी हम समस्ते अंडरलाइन करबा, आकु मध्य हम रिप्रेजेंट करि परिबा what is map। a map a map a map is a representation or a drawing of some area। it may be a small area, a village, a town, okay, a big area, or a very large area like India or even whole world। गोटे whole world हो किंबा गोटे country हो। so a map you like at surface as if you are viewing it from top। so पिले एटी कहा गला a map you look at surface as you are viewing from the top। जदि हमें ऊपर देखिबा, जदि हमें हाइट रु देखिबा ताहाले गोटे मैप whole world in a map you look at the surface as if you are viewing। जदि हमें ऊपर देखिबा ताहाले एटा हम गोटे चट्टान परिका दिसिबो, सरफेस परिका दिसिबो। so an atlas is a book or collection of map। so एटा को मध्य हमें अंडरलाइन करिबा what is atlas। हमें समस्त atlas बुक देखिबा पिले, ओके, जोठी पूरा कंट्री रो पूरा वर्ल्ड रो मैप थाए, ओके, ब्लॉक ठू आरंभ करिकी डिस्ट्रिक्ट रु आरंभ करिकी, ओके, सब जिंस सब जगार मैप गोटे स्टेट रे, गोटे ओडिशा गोटे स्टेट तादरे केतटा ब्लॉक रहला, प्रति ब्लॉक रो मैप तादरे थाए एंड पूरा वर्ल्ड मैप मध्य थाए एंड तादरे कंट्री रो आम कंट्री रो मैप मध्य थाए। सो व्हाट इज एटलास। एन एटलास इज ए बुक or collection of maps। atlas होची is a book or collection of maps। is a book, atlas होची and atlas is a book or collection of map। atlas होची गोटे बुक जोथरे के मैप रो कलेक्शन थाए। सो एटी कोन हो पिले the atlas is a book, atlas is a book of a collection of maps। जो बुक रे कलेक्शन ऑफ मैप्स मैप रो कलेक्शंस थाए। पिले एपर्यंत बुझी पारले समस्ते। यदि वीडियो क्लास स्पीड हो जाउची ताले कहले हमें आउरी स्लो कर देबा, जेमति तुमको कंफर्टेबल लागिबा हम से अनुसार क्लास करबा। ठीक हो, जहां भी पढ़ाला समस्त बुझी पारले, एबे हम आगु कंटिन्यू करबा। as you will discover there are several kind of maps। ओके, हमें एटी बहुत प्रकार रो मैप देखिबा, several kinds, different kinds, ओके, विभिन्न प्रकार रो मैप देखिबा।
कौन कौन से गुड़ाक फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप एंड थीमेटिक मैप। को मैप देखिबा पहले फिजिकल मैप देखिबा, पॉलिटिकल मैप देखिबा एंड थीमेटिक मैप देखिबा। सो इठी हाईलाइट मु करूची पहले। ओके, there are several kinds of maps. First, physical map. So what is physical map? Which mainly shows some natural features such as mountains, oceans, rivers. Okay, so pilaman, physical map रे कौन represent ହେଇଥାଏ? This is the question. What is physical map? What is physical map? ପିଲାମାନେ, which mainly show some natural features, ये कौन करे किसी नेचुरल फीचर को देखाए, नेचुरल प्राकृतिक जिनिस को आमे जो मैप रे देखु, जेमिति कि माउंटेन्स परी किबा ओशेन्स परी, पहाड़ परी किबा ओशेन्स परी एंड रिवर्स परी, नदी समुद्र पहाड़ पर्वत जो दर्शा जाए आम ताको फिजिकल मैप को। देन कम टू द पॉलिटिकल मैप्स। सो व्हाट इज पॉलिटिकल मैप? जोड़ाक हाईलाइट करछि सेगुड़ाक आमे नोट करिबा फॉर फ्यूचर रिवीजन। पॉलिटिकल मैप which shows detail of countries। पॉलिटिकल मैप से कौन हुए ना डिटेल ऑफ कंट्रीज, जोठी कंट्री रो डिटेल थाए, जेमती इंडिया परिका कंट्रीज रो डिटेल थाए, स्टेट रो थाए, बाउंड्रीज रो थाए, सिटीज रो थाए। ओके, तो पॉलिटिकल मैप रे कौन रिप्रेजेंट हुए? which shows the detail of countries, जो मैप कंट्रीज रो डिटेल शो करे, स्टेट रो डिटेल शो करे, बाउंड्रीज रो डिटेल शो करे, शहर रो डिटेल शो करे, हमें ताको पॉलिटिकल मैप को। फॉर इंस्टेंस, a map of India with all its states, union territories and their capitals। ताको गोटे जदी गोटे एग्जांपल नबा इन जे पॉलिटिकल मैप रो जोठी कोन मेंशन थाए, जदी इंडिया रो मैप देखिबा तो सेठी कोन थाए, स्टेट्स थाए, तार यूनियन टेरिटोरीज थाए, केंद्र शासित अंचल जहा कहूचे, देयर कैपिटल्स एवं राजधानी गुडी को मध्य पॉलिटिकल मैप रे हमें देखिबा को पाइथो। देन देयर इज थीमेटिक मैप। So what is thematic map? What do you mean by thematic map? So what is the definition of thematic map? कहले हम कौन लिखिबा? So with a specific kind of information, example in, okay, in addition there are three important components of maps: distance, directions and symbols। So thematic map कहले हम कौन बुझे? With a specific kind of information, जोटी गोटे specific kind of information देखिबा, जेमती एग्जांपल रे हमें देखिले include figure 6.3, figure 8.1 in the textbook। तो figure 6.3 पे कोड इज देखो, this is figure 1.1, 6.3, figure 6.3 and 8.1। तो मु तुमको figure 6.3 देखेबे, figure 6.6 चैप्टर थियो बोले 1.3। ओके, सो हम बुझले जेमती गोटे स्पेसिफिक एरिया को जोठी मैपिंग करा जाइथिबो ताको हम थीमेटिक मैप करबा। तो जोठी कोन थिबो, इन एडिशन देयर आर थ्री इंपोर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ मैप्स। थीम जदी हम कहबा आउ किछ नुवा जिंस हम एठी पढिबा जे इन एडिशन देयर आर थ्री इंपोर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ मैप्स। मैप्स रो तीनटा इंपोर्टेंट कंपोनेंट्स थाए, समस्त मन रखिबा। हमें मैप कोन जानिले, हम देखले तीन प्रकार रो विभिन्न प्रकार मैप देखले, जेमति पॉलिटिकल मैप देखले, फिजिकल मैप देखले। को मैप देखले पिले हमें फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप, थीमेटिक मैप। तो फिजिकल मैप हम कोन जानिले, पॉलिटिकल मैप हम कोन जानिले, थीमेटिक मैप हम कोन जानिले।
देन कंपोनेंट्स ऑफ अ मैप एबे हमें पढ़िबा कोन ना कंपोनेंट्स ऑफ अ मैप सो इठी देखा गला जे देयर आर थ्री कंपोनेंट्स ऑफ अ मैप केते प्रकार रो कंपोनेंट्स अछंती थ्री प्रकार रो कंपोनेंट्स अछि मैप रो देयर आर थ्री इंपोर्टेंट कंपोनेंट्स ओके प्रकार न बोले इंपोर्टेंट ओके तीनटा इंपोर्टेंट कंपोनेंट अछि गोटे होची डायरेक्शन गोटे होची डिस्टेंस आ गोटे होची सिंबल you have already experienced the first two while navigating the map फिगर 1.1 हमें तो फिगर 1.1 देखुଥିଲେ सेतबेले हमें ऑलरेडी डिस्टेंस बा दूरता एवं डायरेक्शन नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ए दिग विषय हमें जानि छे बाकी रहिला सिंबल फास्ट टू हम डेटा को नेविगेट कर देई छे मैप रे एबे हम सिंबल विषय हमें आलोचना करिबा हैव यू एवर वंडर्ड हाउ ए ह्यूज प्लेस कैन फिट ऑन ए स्मॉल पीस ऑफ पेपर पिला माने एते एते बड़ जागा तुम केबे भाबिछो कि एते एते बड़ जागा केमती गोटे पीस ऑफ पेपर रे हम रिप्रेजेंट कर दो पूरा इंडिया को पूरा वर्ल्ड को हम गोटे पीस ऑफ पेपर रे रिप्रेजेंट कर दो तुम माने केबे भाबिछो केमती एटा होउची पिले हाउ इट इज गोइंग ऑन हम भाबिछे केबे नाइ ना भाबिने सो एबे भाबिबा एबे देखिबा एबे ऑब्जर्व करबा have you ever wondered how a huge place can fit on a small piece of paper केमिति गोटे small piece of paper रे सब जिंस फिट हे जाउची it is also thanks to the map's scale हमको एटा को मैप रो स्केल को थैंक कहिबा को पड़िबो let us go back to our map चलो पुनी हमें बैक करिबा मैप बैक टू मैप ऑफ ए स्मॉल सिटी गोटे छोट शहर रो मैप को बैक करिबा जोटा फिगर 1.1 हम देखुथिले each centimeter on the map as printed here represents a certain distance on the ground पिला माने each centimeter on the map रे प्रतिटे सेंटीमीटर को printed here represents to certain distance on the ground मैप रे जोटा गोटे सेंटीमीटर सेटा रियल रे 500 मीटर लेट्स सपोज इट एज 500 मीटर मु कहबी धर एठी गोटे प्लेस अछि एठी रोड अछि एठी आ गोटे घर अछि ओके दिस इज मार्केट एंड दिस इज बिल्डिंग मार्केट एंड बिल्डिंग मु कहली एटा को मु कोन कली गोटे सेंटीमीटर बोली मैप रे देखै छी सो रियली रे मु ताको जते बेले स्केल मेजर करिवि सेटा हबो 500 मीटर सो 500 मीटर को मु मैप रे गोटे सेंटीमीटर रे रिप्रेजेंट करि सो सेति पही हमें एते बड़ जागा को देखै पारु छे मैप रे यस और नो गोटे सेंटीमीटर मैप रे कोन कहै छी ना 500 मीटर सो हमें जते बेले गोटे पेपर रे रिप्रेजेंट करबा धर मु अछि कोठी निमापड़ा रे मो गां होची विष्णुपुर ओके निमापड़ा रो विष्णुपुर होची 5 किलोमीटर मु को 5 किलोमीटर रो पेपर नेबी कि मु को 5 किलोमीटर पेपर नेबी ओके मु रहूची निमापड़ा मो टाउन रे ओके एनएस रे मो विलेज होची कोठी ना विष्णुपुर एटा होची 4 किलोमीटर सो मु एठी तुमको गोटे मैप देखाई देली जे निमापड़ा टू विष्णुपुर 4 किलोमीटर सो एटा केते सेंटीमीटर हबो एटा 2 to 3 सेंटीमीटर हबो सो ए जो 3 सेंटीमीटर मु नेली 3 सेंटीमीटर को एटी कोन कहली 4 किलोमीटर सो मोर एटी 3 सेंटीमीटर केते हला ना 4 किलोमीटर मु ईच 3 सेंटीमीटर को 4 किलोमीटर हिसाब रे काउंट करिवि ठीक सेमती एटी की कहवा जाई छी जे गोटे सेंटीमीटर को 500 मीटर रे रिप्रेजेंट करा होछ जेमते निमापड़ा रो विष्णुपुर 4 किलोमीटर मु ताको रिप्रेजेंट कर देली जस्ट 3 सेंटीमीटर पेपर रे सो एटा ही मैप रो एडवांटेज बुझला पिला माने नाउ रिटर्न टू द मैप ऑफ इंडिया इन फिगर 5.2 चैप्टर 5 में अछि फिगर 5.2 द स्केल इज represented in the bottom left corner by a ruler which 500 written above its length and kilometer on the side it simply means that this ruler हम कहा को scale को कहउछे which measures 2.5 in the printed map corresponds to 500 kilometer on the ground एटी किछि इंपोर्टेंट कथा नै जो जिंस हम कहिली जे मैप रे केमती स्केल रो यूज होची
सेटा हम सेही फिगर रे देखि तांते जोटा को तुमको एटी प्रीवियसली देखाई देछि जे गोटे लॉन्ग डिस्टेंस को हम रिप्रेजेंट करिवा पई हमें लॉन्ग डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करिया पई कोन करछे गोटे छोटो पेपर रे हम गोटे सेंटीमीटर को एतिकी मीटर एतिकी किलोमीटर हिसाब रे रिप्रेजेंट कर दोचे जोटा कि हमको बुझबार क्लियर होचे निमापड़ा टू विष्णुपुर 4 किलोमीटर एही एग्जांपल रो तुमरो क्लियर हे जाइथिबो आई थिंक समस्त एही एग्जांपल क्लियर हे जाइथिबो एही एग्जांपल रो. So the actual distance between 2 points, actual distance between 2 points represented on the map depends on the scale that map is using. Okay. So actual distance का कोठी represent करछि actual distance का मु जो स्केल यूज करथिबि जे गोटे किलोमीटर को गोटे सेंटीमीटर नैछि सो जदि एठी निमापड़ा टू विष्णुपुर एठी 5 सेंटीमीटर होला दैट मींस द एक्चुअल डिस्टेंस होछि 5 किलोमीटर बुझि होला. Then let us return to 4 arrows at the top right of the small city map. जो फर्स्ट पेज देखले एमडी थिला फर्स्ट फिगर जोडा थिला नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट. ओके एटा मु तुमको देखे दोछि मैप. ओके नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट एठी के देखबा. सो इट एडिशन कोन एठी मेंशन करा आइछि the point to 4 directions, the point to the 4 directions which are north at the top, north टा होछि टॉप रे रहिला and moving clockwise तबला हम clockwise मूव करबा जेमति घंटा घंटा एमति बुली बुली आसे घंटा घंटा एमति बुले ना तो एमति आसला बेले को ता पर जो डायरेक्शन पड़िबो सेटा होछि कोन ईस्ट ता पर पुनी क्लॉकवाइज बुलला बेले को पुनी साउथ पुनी क्लॉकवाइज बुलला बेले को वेस्ट नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट. क्लियर समझते. these are called cardinal directions. तो हम आपको कौन कहूचे पहले cardinal direction ताको हाईलाइट कर दो. Directions which are north at the top and moving clockwise east south and west these are called cardinal directions. हम आपको cardinal directions कहूचे. Also cardinal points north east south west ये जो चारिटा डायरेक्शन रहला चारिटा दिग रहला हम ताको cardinal direction बोली कहूचे. समस्त मन रखिबा. other than this आको छाडी देला परे intermediate directions are also used. Intermediate directions are also used. So intermediate direction कोन मु एठी देखौछ तुमको पिले देखो हमें एठी कोन देखिले हमें एठी देखि देले जे हमें एठी देखि देले जे एमती अछि एटा होछि नॉर्थ एटा साउथ एटा सॉरी एटा नॉर्थ एटा ईस्ट एटा साउथ एटा वेस्ट. सो एई पार्ट टाको हमें नॉर्थ ईस्ट करबा एई पार्ट टाको हम कोन कहबा ना ईस्ट साउथ बोली कहला एई पार्ट टाको हमें साउथ वेस्ट कहले एई पार्ट टाको हमें नॉर्थ वेस्ट कहले. क्लियर. सो एको हम कोन कहूचे ना इंटरनल intermediate directions कौन बोले intermediate directions are also used that is north east south east south west north west. Okay most maps simply have an arrow marked with the letter N which points to the north directions जोटा कि कागु पॉइंट करे ना north direction. अब एथि किसी इंपोर्टेंट जानिबार नाही. लेट्स एक्सप्लोर रहला पले एक सेंसर जानिबा पई देछि. ओके तो कोन देखिबा कोन एठी मेंशन कराला देखो पले ठीक है वर्कशीट नंबर अछि जे लेट्स एक्सप्लोर. Consider the map of the small city again. Identify the correct and incorrect statements in the below. The market is north of the hospital.
मार्केटा हॉस्पिटल नॉर्थ अच्छी पिला एटा होची तमे समस्त करिवो ओके एटा होची तुमरो एचडब्ल्यू एटा तुमरो एचडब्ल्यू जो मार्केट धरो एटा गोटे मैप जेमते हमें फास्ट मैप से 1.1 फिगर रे करिया पई धरो मु एठी कहली मु गोटे मैप बनाउची एठी मु बैंक रखुची ओके एठी मु मार्केट रखुची सो बैंक टा कोठी अछि ना एटा नॉर्थ अछि बट मैप टा को सॉरी मार्केट टा कोठी अछि ना एटा साउथ अछि हॉस्पिटल टा कोठी अछि ना वेस्ट रे अछि ता हॉस्पिटल मु कहली एठी गोटे गार्डन अछि गार्डन कोठी अछि ओके गार्डन एठी ईस्ट रे अछि देन एठी आउ गोटे कोन एबे नेक्स्ट शिखिबा नेक्स्ट टॉपिक हम कोन रहि छी ना सिंबल कोन रहला पले सिंबल आर अनदर इंपोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ मैप देखो पहले हमें डायरेक्शन विषय रे एंड डिस्टेंस विषय रे हमें ऑलरेडी फास्ट डिस्कस कर देथिले एबे पाली होची सिंबल्स रो सो सिंबल कहले हमें कोन बुझु छै सो सिंबल्स आर अनदर इंपोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ मैप सिंबल को आउ गोटे इंपोर्टेंट कंपोनेंट मैप रो कहैबी सिंबल को वो हिसाब रे रिप्रेजेंट कराई छी ता गोटे इंपोर्टेंट कंपोनेंट हिसाब रे रिप्रेजेंट कराई छी ओके so symbols are important component of a map. Our map has small drawing of actual buildings and a few other elements, but they are wood. But they are wood. Okay, but there would not be enough space on the map of a large city or country to draw them all. So ସବୁ ଜାଗା को ସବୁ हम जो मैप देखुଥିଲେ पूर्व सेठी किछटा बिल्डिंग रो किछटा बिल्डिंग तापर आउ होची कोन तुमर मार्केट रो किछटा होची बैंक रो बिल्डिंग्स गुडा को सेठी रिप्रेजेंट कराइला किंतु सब जिंस को रिप्रेजेंट करबा सेठी संभव नुह सो इंस्टेड ए सिंबल what a symbol परिवर्ते instead a symbol is used to represent these features so ता परिवर्ते देखो पिला माने बिल्डिंग एटा सिना हम गोटे छोटिया जागा रो हम एठी रिप्रेजेंट करले मैप टा एठी हमें जो 1.1 फिगर रे देखुतिले 1.1 फिगर रे हमें जोटा देखुतिले जे सेठी किछि बिल्डिंग करा हैतला सेठी पार्क करा हैतला गछ लगा हैतला काई ना एटा गोटे छोटियाटा बोले हमें एठी रिप्रेजेंट करले किंतु सेगुडा को सब रिप्रेजेंट करिया पई तार किछटा सिंबल देखा जाय हॉस्पिटल पई एमती एचएस साइन किबा ओके तुम मार्केट पई किछटा सिंबल थाए सो instead a symbol is used to represent these features so particular building को इंडिया मैप रे जदि मु पूरा इंडिया को आंकिबा को चाहिबी ताले ही संभव पर नुहे तेनु करी मु सेठी सिंबल रे यूज करिबी so symbols for different kinds of a building okay for instance a railway station a school a post office for roads and railway lines and for natural elements such as river a pond or a forest in that way numerous details can be shown in the limited space available on the map तो सिंबल पिले कोन होची ना कहा जगह रे यूज होची वी आर यूजिंग सिंबल इंस्टेड ऑफ रियलिस्टिक थिंग्स ओके वास्तव जिनिस परिवर्ते आमे सिंबल रो यूज करछे टू रिप्रेजेंट इट ऑन मैप ताकू मैप रे रिप्रेजेंट करबा पई आमे यूज करूछे so to make maps more easily understood by variety of users map makers use specific symbols ओके लोक मान को बुझिबा पई मैप मेकर माने विभिन्न सिंबल्स इन्वेंशन करिसन डिफरेंट कंट्रीज यूज डिफरेंट सेट्स ऑफ सिंबल्स सो विभिन्न कंट्रीज विभिन्न सिंबल रो यूज करा जाय सो एगुडा को मध्य इंपोर्टेंट पिले एगुडा को गोटे गोटे पॉइंट हबो व्हाई वी आर यूजिंग सो व्हाट इज सिंबल कहले हम एटा को लिखि परिबा एंड आउ कोन हम लिखि परिबा एटी कोन मेंशन करि परिबा सिंबल रे ओके टू पिले माने to make more easily understood by a variety of users map makers use specific symbols okay different country use
different symbols. The Survey of India government body has fixed a set of symbol for map of India. So government body कौन करछि इंडिया पाई सिंबल को फिक्स करके रखिछि ए स्मॉल सिलेक्शन ऑफ देम इज शोन इन फिगर 1.2 हमें फिगर 1.2 रे देखिबा ओके गवर्नमेंट कोन सब सिलेक्ट करछि सिंबल हिसाब रे देखो पिले सो एठी तुमरो सिंबल क्लियर हे जिवो देखो एठी हमें रेलवे लाइन रो सिंबल देखुचे एठी रोड्स रो सिंबल देखुचे एठी बाउंड्री रो सिंबल देखुचे एठी रिवर रो सिंबल देखुचे ओके देन टेंपल चर्च रो सिंबल देखुचे टेंपल पाई केमति सिंबल यूज होची सो रियल थिंग परिवर्ते हमें मैप रे सब जिंस को रिप्रेजेंट करिवा पाई इजीली रिप्रेजेंट करिवा पाई हमें सिंबल रो व्यवहार करथाउ ओके फॉर इंडिया इंडिया पाई इंडियन गवर्नमेंट जो सब सिंबल गुडा को सिलेक्ट करछि ताको हमें एठी देखुचे ओके आई होप एबे सिंबल कोन समस्त क्लियर हे तो पिले बुझीबाटा होची सबटु बडा जिंस मु भाबुची तुम माने बुझी सारथिबो जे सिंबल कोन ओके मैप्स रो एलिमेंट्स कहले हम कोन बुझुचे जेमति हम तीनटा एलिमेंट्स विषय पढितले गोटा होची डायरेक्शन गोटा डिस्टेंस एंड आउट होची सिंबल सो तीनटा इंपोर्टेंट जो हमें विषय पढिले से तीनटा को इंपोर्टेंट मु तुमको डिस्क्राइब करि देली आई होप मु एबे आशा करबी जे तम पाखरे आउ तमरा आउ सेथरे डाउट नथिबो ओके then mapping in the earth okay एबे हमें पढ़िबा mapping in the earth तो कौन पढ़िबा बिले mapping the earth को mapping करिया mapping the earth mapping हमें करिबा एबे so earth mapping माने earth हो छै हमर पृथ्वी को एबे हमें mapping करिबा so mapping the earth is little difficult बहुत बेसी डिफिकल्ट नो बहुत अल्प डिफिकल्ट mapping the earth is little more difficult because our planet is not flat surface हम planet टा गोटे flat surface नुहे planet टा गोटे flat surface नुहे एटा गोटे spherical surface तो एटा को टिके रिप्रेजेंट करिवा मैपिंग करिवा टिके हार्ड हबो किंतु बहुत डिफिकल्ट नुहे इट्स नियरली हैज ए शेप ऑफ अ स्फीयर तो जदी कहबा हम अर्थ रो शेप टा होची गोटे स्फीयर परिका वी से नियरली ओके नियरली टू स्फीयर बिकॉज़ इट इज नॉट परफेक्ट स्फीयर काहे कि ना एटा पूरा गोल नुहे एटा अंडा आकृति हम को ओके so it is not perfect sphere but is slightly flattened at poles okay slightly flattened at poles that means osaria okay so ei jaga au ei jaga ठीक है poles jaga रे एटा ठीक है ओके ठीक है flattened so एटा को हमें nearly sphere कहूजे sphere कहने एटा समस्त मन रखबे nearly sphere why we represent earth as a nearly sphere not sphere because both points are flattened both spheres are sorry both poles north pole and south pole are little flattened so however in practice we will consider it a be spherical representing a sphere accurately on flat sheet of a paper is not possible but a flat sheet of a paper रे पूरा represent करिवा earth map टाको not possible to understand why peel an orange in such a way that have just 3 or 4 large piece of the skin then try and flatten them on the table you will see that you cannot do without tearing at the edges पिला माने जतबेला हमर कमला चोपा चढेबा सेतबेला हम ताको पूरा फ्लैट करिक टेबल ऊपर रखि परिबा कि जे पन हम ताको मझुर न चिरते से पन फ्लैट हे कि रहइबो नाही तुम मान तुम घरे करिक मधन देखि परिबो गोटे कमला चोपा चढे कि ताको फ्लैट करिक टेबल ऊपर पकेबो से जमा फ्लैट हे कि रहइबो ताको कटिंग करिया पड़िबो नाउ कंसीडर ए ग्लोब ओके नाउ कंसीडर ए ग्लोब एबे गोटे ग्लोब को कंसीडर करो नाउ कंसीडर ए ग्लोब
which is sphere on which a map is drawn जोटा कि गोटे स्फीयर गोटे स्फेरिकल होता है ओके जो थे कि पूरा मैप टाको ड्रॉन होता है गोटे एमिति फ्लैट स्क्वायर रे रिप्रेजेंट होबा परिवर्ते हमें मैप को अर्थ मैप को गोटे ग्लोब रे रिप्रेजेंट करिछे दिस इज मे बी a map of the earth the moon the planet Mars, the stars, and constellations in the sky. So it गोटे वर्ड आमे पढ़ी आमे तो मार्स कौन जानिचे ओके प्लैनेट कौन आमे जानिचे मार्स प्लैनेट ए विषय जानिचे स्टार कौन आमे जानिचे एबे गोटे वर्ड आसुची कौन ना कॉन्स्टेलेशन सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द कॉन्स्टेलेशन એટલે कॉन्स्टेलेशन कहिले आमे कौन बुझिचे कॉन्स्टेलेशन कहले आमे तारा मंडल को बुझुचे काहाकू ना तारा मंडल कॉन्स्टेलेशन कहले कौन बोले ना तारा मंडल अर्थ कहले पृथ्वी तुम जानिचो स्टार कहले तारा जानिचो ओके सो इट गोटे वर्ड अछि प्लैनेट मार्स अर्थ जानिचो मून जानिचो प्लैनेट मार्स बोले प्लैनेट मार्स कौन प्लैनेट मार्स कहले कौन बुझुचो प्लैनेट मार्स व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ प्लैनेट मार्स सो प्लैनेट मार्स रो मीनिंग जदि मु कहबी जे प्लैनेट मार्स मीनिंग मंगल ग्रह सो पिला मार्स एंड प्लैनेट प्लैनेट कहले ग्रह मार्स होची मंगल ग्रह मंगल सो मंगल ग्रह मार्स प्लैनेट so the physical the stars and the constellations jahako hum taramandal kahile in the sky it is the physical object like the one shown in the drawing on the next page it is sphere that is generally made of metal plastic or cardboard metal plastic au cardboard को नहीं गोटे ग्लोब आमे देखिता सो एठी तम मान को गोटे फिगर दिया है ग्लोब रो समस्त देखि पाउछन ग्लोब रो फिगर जोटा कि प्लास्टिक कार्डबोर्ड मेटल को लेके तैयार हम समस्त देखि फिगर ग्लोब रो हियर वी विल स्टडी द ग्लोब रिप्रेजेंटिंग द अर्थ ज्योग्राफी एठी हमें पढिबा ग्लोब विषय रे जे कि पृथ्वी रो भूगोल विषय रे कहूची बिकॉज़ द ग्लोब एंड द अर्थ हैव सेम स्फेरिकल शेप काहे कि ना ग्लोब एवं अर्थ रो समान स्फेरिकल शेप रही थाए ये जो ग्लोब जेमति देखुच अर्थ मध्य ठीक एई बोली देखिबा को ये छोटो अर्थ तो बहुत बड़ो जोटा हम देखि परिबा नाही हो because the globe and the earth have same spherical shape a globe will better represent the geography of the earth than a flat map but a flat map परिवर्ते आमे जति गोटे ग्लोब को देखबा सेठी बेटर अंडरस्टैंड आमे करि परिबा क्लियर समस्त पिले so एठी आमे फर्स्ट आमे अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेट्स then latitude तो फर्स्ट हमें मैप रे जब हमें मैप पढिबा अर्थ रो मैप बा ग्लोब विषय पढिबा एटी हमें कोऑर्डिनेट्स विषय जानिबा सो व्हाट इज कोऑर्डिनेट्स ओके कोऑर्डिनेट कहिला हमें कोन बुझी इमेजिन ए बिग मार्केट इन ए सिटी और टाउन गोटे बड़ टाउन रे किबा सिटी रे तुमे गोटे बिग मार्केट को इमेजिन करो with neat rows of shops with neat rows of shops all the small all same size you want to meet a friend at a stationery shop तुम्हें गोटे फ्रेंड को स्टेशनरी शॉप रे मीट करिया पई चाहूछ इनसाइड द मार्केट जोटा कि मार्केट भीतर अछि बट योर फ्रेंड डज नॉट नो वेयर द शॉप किंतु तुम सांग जानि नाही तो शॉप ता कोठी अछि सो यू वुड गिव डायरेक्शन तुम्हें कौन करिवो ताको डायरेक्शन दबो meet me at 6 p.m. at the 7th shop in the 5th row from the entrance देखो बोले ये गोटा होची मार्केट आज रे एमती रो है कि दुकान लगी दिस इज 1 2 3 4 and this is 5 so सी कहले कोन
सेभेन सब एटी देखो एटी कौन अच्छी फास्ट सब सेकंड सब थर्ड सब 4 5 6 राउज सेभेन सब तो तुम्हें यही पड़े एंट्रेंस कल सो एंट्रेंस रो फिफ्थ रो रो सेभेंथ सब रे तुम मत आस्ते कि देखा करि परिबो दिस विल अलाउ योर फ्रेंड टू ओके दिस विल अलाउ योर फ्रेंड टू प्रिसाइजली डिटरमाइन योर लोकेशन ओके से कौन हबो ना तमर लोकेशन को से डिटेक्ट करि परिबो नाउ consider a chessboard एबे गोटे chessboard को consider करबो to record moves by advanced players letters are placed alongside it देखो play letters are placed the a b c d e f g h ओके एडी सब लेटर्स को रिप्रेजेंट कराई छी so letters are placed alongside the main pieces from A to H. See the images. Hey, देखो A B C D E F G H H पर्यंत लिखा है and numbers from 1 to 8 number कोड लिखा है 1 to 8 पर्यंत between the two side. Okay. So जो इटी कौन पे लिखा है ना सेमानकर मूवमेंट को रिप्रेजेंट करिया पाए देखो थोड़ा मु कहबी एटा C रु बाहर की गोटे स्टेप एठी की आसिला ओके इटी ई स्टेप एठी चार एठी की आसिला ओके सो मु कहबी यदि जे हॉर्सटा कोठी अछि हॉर्सटा कोठी अछि बिले ना फर्स्ट रो एक नंबर रो रो जी प्लेस रे अछि किंग कोठी अछि ना एक नंबर रो डी प्लेस रे किंग ना ओके दिस इज किंग so this simple system allows players to mark each square okay record every move प्रत्येक मूव को रिकॉर्ड करिवारे एटा हेल्प करूछ here the white side has just opened the game by moving the queens pawn to squares forward a very common opening so the pawn is side to have moved from d2 to d4 लेवन देखो from d2 to d4 एटी कोन आइछि मूव करा आइछि काहा को मूव करा आइछि बिले ओके your white side has just opened the game by moving queens रा जे pawn थिला ताको मूव करा आइछि केते प्लेस को मूव करा आइछि ना d रा 2 प्लेस को गोटे स्टेप जाइछि दीटा स्टेप जाइछि ओके 2 प्लेस शुरू 4 स्टेप को जाइछि एटा d2 प्लेस एटा जो जगह रे अछि एटा d4 स्टेप बुझ गला एमटी लोकेट करा होछि सो सेमटी लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड को व्यवहार करके हम मैप को लोकेट करि परिया देखो the system used in these two example may be called a system of coordinates ऊपर जो एग्जांपल देखिले ताको हमें कहि परिबा system of coordinates thanks to their two coordinates the stationary shop as well as the chess square on the chessboard can be precisely determined. A similar system of coordinate used in the world map to determine the location of any place on a map. Let's us see how this system works. Okay, चलो देखिबा केमते सिस्टम वर्क करू तो एसएसटी रे हमें आज बहुत गुडा जिंस पढिले बहुत गुडा जिंस सिखिले मु आशा करिबि जे जेति कि पढाला जहां भी पढाला तुम समस्तिंगर से जिंस क्लियर हेई सारिथिबो जदि काहार भी किछ डाउट रहउची देन तुम माने मते पचारि परिबो कमेंट सेक्शन रे ओके सो जदि वीडियो भल लागिची समस्त चैनल को लाइक करिबा सॉरी वीडियो को लाइक करिबा चैनल को सब्सक्राइब करिबा पुणी देखाबा गोटे नुआ वीडियो लेक्चर रे रहउची जय जगन्नाथ बंदे जय